Students, today we have learned data handling. Data handling, the first topic is mean. Mean means average. Mean means the sum of all observation by total number of observation is known as mean. Let us take an example to find the mean of the data. Questions 5, 6, 4, 6, 5. Find its mean. Find its mean. इसका मीन आप निकालो. Find its mean. तो मीन इक्वल टू 5 plus 6 plus 4 plus 6 plus 5 by number of observation. Number of observation is 1, 2, 3, 4, 5. 5. So we sum these terms. 5, 6, 11, 4, 15. 15, 6, 21 and 21 plus 5, 30, 26. 5, 6, 11, 11, 4, 4, 15, 15, 6, 21 plus 5, 26. 26 by 5. It means that 5.2. 5.2 is the mean of the data. Okay. In the next topic, we learn about median. What is median? Median is very important topic of this chapter because median, how to find median of the raw data. Let us see on the blackboard. How do we find median of the raw data? Median. It is median. Median. Median n plus 1 by 2 if number of terms is odd. Okay, let us an example. 1, 5, 3. Okay, this is the raw data. First of all, we arrange in ascending order. Arrange in ascending order. Arranging ascending order. Okay. Arrange in ascending order. 1, 3, 5. Number of data is 3. This is odd. This is odd. So mean equals to median equals to n plus 1, 3 plus 1 term by 2 th term. 4 by 2 एंड वैल्यू आया इसका सेकेंड टर्म. तो सेकेंड टर्म में कौन सा नंबर है देखिए ध्यान से. डाटा को अरेंज करने के बाद असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद सेकेंड नंबर में कौन है 3 है. तो 3 इज़ द मीडियन. 3 इज़ द मीडियन आंसर. ओके. ओके स्टूडेंट्स, our next topic is in median we know about how to find the median of even terms. Even terms का मीडियन कैसे निकलेगा. तो इसका जो फार्मूला है, ये इसका फार्मूला मैं आपको बता रहा हूँ. दिस इज द फार्मूला ऑफ इवन टर्म्स. n plus 1 by 2. फर्स्ट ऑफ ऑल n by 2 th plus n plus 1 by 2 th term by whole 2. This is the median of the data. Okay. So we take an example. Example is 2, 4, 3 and 3 also. This is the data. So we take 1, 2, 3, 4. This is the even terms. The number of terms is even. Number of terms is even. So median equals to, first of all, arrange data in ascending order. 2, 3, 3, 4. Okay. We arrange data in ascending order. 2, 3, 3, 4. Okay. So median equals to 4 by 2 plus 4 by 2 plus 1 term
बाई 2, तो 2 प्लस 3 बाई 2। तो सेकेंड और थर्ड टर्म्स, सेकेंड टर्म का वैल्यू कितना है बच्चे, तो 3 है, और थर्ड टर्म का वैल्यू भी कितना है, 3 है। तो 3 प्लस 3 ये टर्म है, TH टर्म है, ओके। सेकेंड और थर्ड टर्म के बात कर रहा है, तो 3 प्लस 3 सेकेंड टर्म 3, थर्ड टर्म 3, 3 3 6, 6 बाई 2 कट के वैल्यू कितना है, 3। तो ये आपका हो गया मीडियन ऑफ इवन टर्म्स, ओके। नाउ वी लर्न अबाउट मोड। व्हाट इज़ द मोड ऑफ द डाटा? मोड मीन्स बहुलक। रॉ डाटा में जो नंबर जितनी बार आता है वो उसका मोड कहलाता है। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी नॉन एज मोड। मोड मीन्स हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। मोड मीन्स हाईएस्ट frequency. Highest frequency. As we take an example, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 3, 4, 3. In this data, the highest frequency is 3. 3 have 1, 2, 3, 4. In this data, there are 4 3. So the frequency of 3 is maximum. So mode of data is 3. Okay, because 3 contain more and more frequency, and high, it means that highest frequency in this data. In any data, in any raw data, highest frequency is the mode of the data. Okay, this is the chapter of data handling. We discuss the questions which are based on mean, median and mode. Okay.